Hello student, today we are discuss another important topic of scaffolding. In first part we can see the single scaffolding, and in this part we can see the double scaffolding. So this whole setup is our double scaffolding. This is our double scaffolding. What is basically difference between single scaffolding and double scaffolding? In single scaffolding, we can see that the put log is rested one end in our lasers, but second end rested in our walls. But in a double scaffolding, we can see here that no relation between the wall and between the scaffolding. The scaffolding is freely involved. Here no any connection between wall and scaffolding. Here are we can use two setups of standards. Here we can see that two sets of standard and two sets of our lasers. You know that the vertical standard member, these vertical standard members is our standard, and here we are see that this is our laser, and this is parallel to the wall and a horizontal member. You also see in single scaffolding the lasers is our horizontal member which is parallel to our construction. In lasers we can put our put log. Here you can see two sets of standard and lasers. So one end of put log rest in one side and second end is rested on wall side. This is our wall side and this is another side. Here our scaffolding is fully free of our construction. These types of scaffolding construct for the plastering, because in plaster work we cannot hole in the wall because we want a smooth finish, means final finish. If we can done painting work, so we also want a free temporary structure. We cannot damage our complete construction. In painting work, in plastering work, for decorative purpose, if we can use glass panel, so we want like this types of temporary structure which is free our construction work. For in this type of construction purpose, we can use then our double scaffolding. In double scaffolding, for giving a lateral stability, you can see here one side is wall but another side is nothing. Another side is nothing. So we can give a support in lateral direction by providing a rackers. What is this? This is our rackers. One end of rackers is stay in ground, very rigid foundation. Here we are provide a rigid foundation.
who is not settled by the rackers, and one end of rackers stay in scaffolding by tightly. Here we can bound it tightly with the standards or lasers. This is our standard member. This is our standard member, and this is our lasers. Also, you can see in first part single scaffolding. And what is this? This is our put law. Put law. Here we can see a cross section view. This is a cross section view. Here are another standard or another put log behind it, one by one, one by one. For workmen, we can provide here. What is this? This is our boarding platform. This is our boarding platform. This is our boarding platform. Our workmen stand here and do work. The distance between wall and wall standard not more workman hands or the 150 mm. 150 mm means this height not less than 150 mm. The distance between the wall and wall standard minimum 300 mm. Not more than it, because the construction work not more than 300 mm. So this is our whole setup of double scaffolding. बेसिकली ये जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, इन्हें आप जानते ही हैं कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। और ये वर्टिकल मेंबर कैसे फिक्स किए जाते हैं, या तो हम मिट्टी खुदाई करके इनको मिट्टी के अंदर डाल के फिर अच्छे से इनको फिक्स करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, सैंड बैग, एक बैग में सैंड भर के उनके अंदर इनको डाल करके क्या करते हैं, एक प्लेस पर एकदम से फिक्स करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। जस्ट इसी के पीछे एक के बाद एक स्टैंडर्ड को हम लोग क्या करते हैं, रखते जाते हैं। सपोज दैट look like this. This is our standard. This is our standard. फिर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन, एक के बाद एक, और फिर इनको आपस में क्या करते हैं, पुट लॉक से ऐसे करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, पहले स्टैंडर्ड हो गए, और ये हमारे क्या हो गए, दूसरे स्टैंडर्ड हो गए। मीन्स ये वॉल साइड के स्टैंडर्ड हो गए और ये बाहर साइड के स्टैंडर्ड हो गए। एक हॉरिजॉन्टल मेंबर लेजर ये, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर लेजर ये, तो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर लेजर ये, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर लेजर मेंबर ये, और इनके ऊपर हम लोग किसको फिक्स करेंगे, पुट लॉक को फिक्स करेंगे ऐसे। तो इनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पुट लॉक को फिक्स करेंगे, और इनको क्या करेंगे, आपस में इनको बांधने का काम करेंगे रस्सी से।
ऐसे रस्सी से हम लोग क्या करते हैं, इसको बांधने से काम करते हैं। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, टिम्बर यूज कर रहे हैं, अगर हम लोहे का इसका फोल्डिंग यूज करते हैं तो उसमें प्रॉपर सेटअप होता है इन लेजर्स को टाइट करने के लिए। देन पूरे सेटअप को लेटरल स्टेबिलिटी देने के लिए, बिकॉज देखिए इस तरफ तो हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो इधर कुछ कर नहीं सकते हैं, इधर हमको एकदम फ्रीली स्पेस चाहिए रहेगा, बट हम चाहेंगे कि हमारा ना ऐसे टर्न नहीं होना चाहिए, इसका फोल्डिंग बाहर साइड को ऐसे टर्न नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, रैकर्स प्रोवाइड कर देते हैं। रैकर्स प्रोवाइड करते हैं। रैकर्स का एक जो हिस्सा रहता है वो जमीन पर रहता है और एक बहुत रिजिड फाउंडेशन के साथ उसको क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं। और दूसरा हिस्सा जो होता है वो हमारे इसका फोल्डिंग से कनेक्टेड रहता है, जो हमारे इसका फोल्डिंग को क्या करता है, स्टेबल रखता है। अगर ये हमारा इसका फोल्डिंग बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ये इस डायरेक्शन में लेटरल स्टेबिलिटी देंगे, और अगर ये अंदर साइड को जाने का कोशिश करेगा तो इस डायरेक्शन में लेटरल स्टेबिलिटी देंगे। तो रैकर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in double scaffolding. Even you also use in a single scaffolding for lateral stability, but in double scaffolding this is the very important members. So this is the whole setup of our double scaffolding. In next lecture we can discuss the terrestrial and suspended scaffolding.